ಪೇಚಿ ಪೇಸ್ಲೆ ಜಚ್ಚು $15 ಕೊಡ್ತಿರೋಂಗ என்கிட்ட $15 நான் கொடுக்குறேன் சுமேதாவும் $15 கொடுப்போம் बस आते தான் சொல்றேன் நீ इतना कुछ अलग ना पड़ रहा नहीं है 3000 आची सही मम्मी को प्राइस जानना था तो बोला प्राइस मत जानो मैं वही बोला प्राइस जानने के लिए कुछ भी ऐसा गलत बात निकाल देता है मुझसे मेरा मतलब ये था कि आपको प्राइस जानना था ना मैं प्राइस इसलिए मैं कितना दूंगी फिर ना $15 दो जगह मैं दे दूंगी ना देना लेकिन चालक ये बोलना सही नहीं नहीं मैं ये बोल रहा था कि मम्मी को फिर अब प्राइस पूछोगे पैसा इसके पीछे लग जाएगी ना नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो तो चुप रहे बोला प्राइस पापा ने $1 अभी उसको देना जरूरी है ना और अभी इसके बाद अभी डाल रहे हैं कितना देना बोले तो दे देंगे क्यों किसी के ऊपर पूरा उतना पैसा डालने का फिर उसको भी मेरे पैसे में हिसाब से मैंने पूछा नियत से पैसे मैं ले ही लूंगा उसको चिंता नहीं है मैं क्या सुनो शांत हो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा था कि तुम लोग सोचोगे अरे इतना खर्चोगे फिर ऐसे करते रहोगे वो बात नहीं है मैं तो उस दिन क्या बोली उधर चने इंडिया ने सो मैं बोली तो उसको जितना पैसा होने दो हम लेंगे तो मैं ऐसे ही बोली थी तो फिर मैं ये क्या इसके लिए मैं दुखी होंगी अपनी गलती हो गई गाड़ी अरे सीरिया मैं खत्म पन्नुगा पेज के सो ಇಲ್ಲ ಜನಿ ಕೊಂಚ ಬೇಸ್ ನಾ ಪೇಸ್ ಸೋನ ಉಳಿದ ಇಂಡೇಷನ್ ನಾಯಿಗೆ ಅದು ಪೂರೆ ಚಿಟ ಅದು ಉಂಗ ಪುಂಚಿ ಚೂಸ್ ಸರಿ ಅದು ಉಂಗ ಇಂಡೇಷನ್ ಅದು ஏவோ மணி பேஸ் पे चार्जेस பண்ணிறேன் हां तो கொஞ்சம் படுக்கைக்குதுல நான் அத்த சொன்னேன் உங்களுக்கு இப்போ पूरे चना உங்களுக்கு சொன்னதுக்கு நான் फादर टेंशन हो गई कास कच्चे जी और कास कच्चे जी तो सुना ना ना मनसले और एकेरेलो वायरे ಒಂದು ಪೇಸ್ ಇಡ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಸೋಸನೆ ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ मैं चाला का सुना कि इंडियन करेंसी के में वो फिर ना 3,000 रुपये सर हाथ में खर्च फिर से अंजू 16 रे 3 खर्च हो गए ऐसे खर्च हो गए सुना खर्च हो गए तो हो गए अभी भी जाएंगे ना फटाफट चेंज करना फटाफट करेंगे उस शहर में तो बोला फोटो खींचते ना रहने के लिए वो जल्दी आ जाते हैं उनके लिए अपने लोगों के कल वो बहुत फोटो खींचने लेट लगे थे वो सबसे जिसका हो जाए कोई पीछे मत देखो दो लोग आगे बढ़ो आप पापा जी आगे बढ़ जाओ बस दो लोगों को छोड़ के मत जाओ कि बिल्कुल अकेले आगे बढ़ गए पापा को इसलिए कहता कपड़े बदलने की जरूरत क्या है कहना नहीं चुप फिर हाथ में लेके चिल्ला रहे हैं तो मैं बोला शांत रहो मुंह बंद करो अपना और कपड़े पहन बता रहे आप आगे से देख लो आप हमें मत ढूंढो ये ढूंढेंगे हमें नहीं ढूंढेंगे आप ढूंढो पापा को पापा ढूंढेंगे हमें ये नहीं कि एक को सब लोग ढूंढ रहे हैं दो का झुट बनाओ वैसा नहीं है अंजू साथ फैमिली में सारे फैमिली जाएगा इसीलिए ना कोई कहीं रह जाएगा हम फैमिली है ना इसीलिए नहीं तो क्यों किसी और को थोड़ी हम ढूंढ रहे बात वो नहीं है बात कोई रह गया तो फिर हम निकल जाएंगे आगे फिर बोलेंगे मैं भी खुद बोलूंगी या जस्टिस भी बोलेगा तुमने देखा नहीं हम किधर क्या है बच्चे को हमने लेके उधर बैठा हुआ उसका ऐसा मेरे को ऐसा हो गया इसको ऐसा हो गया तुम देखते भी नहीं ऐसे निकल गए हाँ इसलिए बोल रहा हूँ सब साथ में है बस आज सुबह जल्दी करो ताकि वहाँ पे लेट ना हो और वो टाइम जो बोला टाइम पे वहाँ पे रहना है 8 बजे निकलेंगे 7:30 को बोलूंगा ठीक है अंजू कब से 5 बार बोलोगे तो गलती अपनी है ना तो छोड़ दो बात खत्म करो 7:30 को बोले 7:15 हम लोग को 7:20 हो गए थे फोटो में कपड़े चेंज करने के अभी आए तो एंजॉय करो यहाँ पे क्या किया और रेड सी के नाने के लिए कपड़े 2 दिन से पहले से बैग में डाल के रखे हुए अब मेरे को बड़बड़ा रहे मैं रेड सी का कपड़ा देख मेरे को 2 दिन से मेरे को बोले तू लेके चल बोले अरे जब वो बोलेंगे लेके चलेंगे आज क्या करें रेड सी का कपड़ा 2 दिन से लेके घूम रहा हूँ ये लोग बोले नहीं अभी ऐसा फिर वो सब बाहर निकाले फिर ये सब
मैं क्या हो रहा हूँ अंजू, बात को छोड़ दो भाई, इस बात को छोड़ दो, दोनों को यही बोल रहा हूँ। तो सिलसिले में सब चीज़ें बोलो, छोड़ दो बात को, हो गया ना, अभी आगे देखो जो कर रहे हो वो देखो। एक बोलो कि 10 बातें फिर निकलेगी, छोड़ दो बात को। और क्या होता है, दिन भर बात करेंगे, चिड़चिड़पन रहेगा इस चीज़ का, क्या रहे ऐसा हो गया वैसा हो गया। खुशी से रहो, खुशी यहाँ पे रहो, मैं हरदम ये बोलता हूँ। गए तो गए, अभी जो है वो एंजॉय करो। नेदुगुड़ा में $5 கொடுக்கணும் எனக்கு $5 இதெல்லாம் கிஃப்ட் வாங்கணும். الو حاضر. هاي كنيسة بمليار اي وحدة. هذا شيء؟ بقول اي وين نزلت الكنيسة اي وحدة، الأولى ولا الثانية؟ ايه انت رايح برا. يعني وين بالشروط لا؟ وين بالشروط؟ كل شيء بالشروط صح صح على اليمين. وين السوفونير لا؟ مش فاهم. وين السوفونير بالصدر ماشي اوكي وين السوفونير وين المسافة؟ ليش انا اخذها شو واحد برا. طيب حاسبوك؟ بعرف هذا كل شيء هذا شوف وين بقول لك. طيب يعني حاسبوك ولا حاسبني انا؟ اذا حاسبوك اخذ $45. $40 الأولاق 45 الأولاق. Be red dot signal. Okay. So if turns to equal to sign, that means the and the mountain of Gilboa forming kind of an entrance to the northern side of Israel through the ancient time, from the ancient time. So this is the mountain of Gilboa, which is the Bible tells us also King David, he was lamentation on this mountain after King Saul he was killed. Okay, we're crossing now from the east to the west. If you want also to know about the currency here in Israel, we use the money, it's called shekel. Okay, the rate between the dollars and the shekels, if you want to change in order to know. So, like $100, it costs 380 shekel. 3.8 dollar. $1 is 3.8 shekel currency, Israeli shekels, and the prices here in Israel. I know you've been in Jordan, which is cheaper prices than in Israel, but in Israel, I mean, it's more expensive because all connected with the oil. Jesus, he raised the son of widow in Nain. As it's mentioned, I think in the book of Luke chapter 4. And on the southern side of that mount, that where is also, it's two stories actually. One, the prophet Elijah, he also raised the son of widow, and the other one is also the student of the prophet Elijah, Elisha. Also, there is a woman, she asked him to get a baby, and he asked his God, and the God answered him, and she gave her a baby. And after the baby started to rise up and to become a childhood, then he died. So she sent an emerge message to Elisha to come immediately. And then when Elisha came, he slept above the boy, and he raised him again, or he healed him, and he became again from the death. He raised them from the death. So the Mount Moreh, it's with the Mount Tabor. We can see Mount Tabor opposite Mount Moreh. In a minute you can see it. And Mount Tabor
in a clear day, it's look very beautiful. Maybe tomorrow when we go there, you can see it here in the front of us. It's an isolate mount, forest coming from the ground millions of years ago, and it's forest mount, and surrounded, you see, it's nothing. So it's not connected with the ridge of the mountain of Nazareth. So now in the front of us, that's the Nazareth. By the way, Nazareth, the meaning of Nazareth, it have two meaning. It's coming from the Hebrew word Netzer, which means a guard or guardians, because it might be Nazareth in the ancient time guarding the Isreal Valley, which is on the left side. This is part of the Isreal Valley. All the valley, when we start climbing up, you can see it much better or more clear. But also Nazareth, it's coming from another source of word, Netzer, which means offspring or offshoot, as from the tree of Jesse coming offspring, Jesus, from the house of David. So that's the meaning of Nazareth. But in Arabic we call it An-Nasira, which means the victorians, or the victory, the people who's gained a victory. So that's the meaning of Nazareth. Nazareth, it was in the ancient time very small village, not that very important, but it started to become important actually as. So the name Isreal Valley, Isreal, it means the most planting area. Look to the Mount Tabor. Mount Tabor. At the top of Mount Tabor, there is a church. The name of the church, the Transfiguration, where Jesus was transfigured in front of 3 disciples. While if you look on the left side, this mount, it's called Mount of Precipice. Precipice, you know, Jesus was rejected in Nazareth, and the Jews, they took him to drop him, and he jumped in between of them. So if you look, there's a brown sign here on the front left side. It's mentioned Mount of Precipice, or Mount Precipice, the jumping mountain. So it's traditionally the place where they believe that Jesus was jumping among the people, and he goes to the side of the Sea of Galilee, where he established his first ministry. So in front of us now we can start to see Nazareth. Nazareth, I mentioned what does it mean, but at the top of the mount where you can see gilded dome, that's a mosque, but below the mosque we can start to see a big structure with a pyramid, like a dome pyramid. That's the Church of the Annunciation. Okay, so we go to eat, and then later we will come to visit the Church of the Annunciation, and within the Church of the Annunciation compound there is the small church, which is less important than the Church of the Annunciation, but it's called St. Joseph Church, where we also can see it, and we will see when we're going to finish, or we're going to finish the Mass, or we try to get the Mass. I hope that priest, they can help me, and then we'll see how the time it goes with us, and regarding to the time we will see what we're going to do, if we're going to go to Cana or we go to the hotel. So it is 4:30 and we're still in Nazareth. There is no chance to do Cana. So we'll go back to the hotel, take a rest, sleeping, and we start tomorrow. Tomorrow I will start. I'm not sure if we don't finish Cana, so tomorrow we have to do Cana, Tabor, which is a lot of time, and then we have to go to the Sea of Galilee to visit Mount of Beatitudes, Tabgha, promise of Peter,